Hi everyone. Today we are going to do MCQs from NCERT Exemplar for linear equations in two variables. Okay. अभी तक हमने linear equations के NCERT based questions किए. Then we did word problems, detailing with graphs. Right. Now we are going to do with Exemplar. In case you had missed the previous videos, I am attaching the link underneath and you can check them. Okay. Now starting quickly with them. So the first question says a linear equation 2x minus 5y equals 7 has a unique solution, two solutions, infinitely many solutions, or no solution. Okay, first of all, when we talk about unique solution as the word clearly says, एक solution, right? अब when we are talking about 2x minus 5y equals 7, कितने solutions मिल सकते हैं हमें? Let's see. If I substitute x equals 0, right? X equals 0 डालती हूँ तो क्या मिलेगा हमें? We will have 0 minus 5y equals 7. That is y equals 7 by minus 5, right? And if I substitute x equals to 1, what I will get? 2 minus 5y equals 7. That means minus 5y equals 5 and y equals minus 1. इसी तरह से if I substitute x equals to 2, right? What do I get? 4 minus 5y equals 7. So minus 5y equals 3 and y equals minus 3 by 5. Now, what did I do? I substituted three values in front of you. 0, 1, 2. I substituted three values intentionally because एक value substitute करती तो लगता कि शायद unique solution है. Two values substitute करती तो लगता शायद two solutions है. But नहीं. I substituted only three values. If you want, you can try with any values. But the answer is simply infinite many solutions. मैंने 0, 1, 2 लिया. If you take -1, -2, 0, you will have different solutions. Someone else may take different set of solutions. So that is what it means whenever we are talking about any linear equation in two variables, a single equation, it will always give us infinite set of solutions, right? ये substitute करके I just showed it to you. But if you get such an equation and these are the options, you can just blindly tick on it. It's infinite solutions. No need to keep on substituting and try on, right? Okay. So now the next question. The equation 2x plus 5y equals 7 has a unique solution if, now, they are telling us that this has a unique solution. लेकिन वो unique solution कब होगा? When x and y are natural numbers, positive real numbers, rational numbers. Okay, natural numbers. सबसे पहले what are natural numbers? These are the numbers which start from 1 till infinity, right? Positive real numbers. That means we're talking about all the numbers. It can be decimal, it can be rational, it can be anything which are positive, greater than 0, right? And then real numbers, you know, rational is rational. And then the option is rational P by Q form. Okay. So now, अगर हम इसमें x is equals to 0 डालते हैं, right? I'm just showing it to you. X is equals to 0. What do we get? 5y equals 7. So y equals 7 by 5. It is rational, right? Now, if I substitute x equals 1, अब 1 क्या है? It's a natural number, right? So if I substitute x as 1, what do I get? 2 plus 5y equals 7. So y comes out to be 5. 5y comes out to be 5. So y comes out to be 1. ये क्या है? दोनों natural है, right? Now, if I substitute x as 2, 4 plus 5y equals 7. So 5y equals, we get 3 and y is coming out again rational, right? Now, what are they saying? If both are natural, पहले केस में दोनों natural थे, second केस में नहीं है, but दोनों केस में natural थे. Positive real, yes, we are having positive real, right? Real numbers, probably. Rational numbers, दोनों को rational. But see, the condition says that both x and y has to have the same, right? And that is only with the A option because both are natural number and then only it will have a unique solution. Otherwise, infinite solutions हैं, लेकिन unique solution के लिए, that is एक solution के लिए, both are supposed to have natural numbers.
Okay. Now, moving on to the next question. So what do we have over here? If 2, 0 is a solution of the linear equation 2x plus 3y equals to k, then the value of k. बहुत easy question है. What you need to do? You just need to plug in the values of x and y as 2 and 0 and solve for k. So what do we get? 2 times 2 plus 3 times 0 equals k. क्या value आ गई? 4 equals k, right? And here we get 4. Next question. Any solution of the linear equation in 2 variables is of the form. अब देखो उन्होंने कहा है 2 वेरिएबल्स है लेकिन y का कोएफिशिएंट तो 0 है. ओके, सो स्टिल हमें क्या मिल रहा है? अगर हम इसको सॉल्व करें, व्हाट डू वी गेट? 2x plus 9 equals 0. x equals minus 9 by 2. अब x minus 9 by 2 है और x minus 9 by 2 is only in this solution. लेकिन उसके साथ एक m अटैच कर दिया है. ओके, m क्यों अटैच किया है? सी, m is just for the value of y. y में हम कुछ भी वैल्यू डाल देंगे, हमारा x तो तब भी -9/2 रहेगा. लेट्स सी, 2x plus 0 times m plus 9 equals 0. m से हमें इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा because it is getting multiplied with 0, right? So we are having 2x plus 9 equals 0, and that means again x is coming out as -9/2, right? And hence the answer is A option. M is just to satisfy the value of m because see 2 variables है यार, तो कुछ तो वैल्यू देंगे उसकी, तो उसकी वैल्यू के लिए उन्होंने m लिख दिया है कि m में हम कुछ भी डालते रहें, x तो हमारा -9/2 ही रहेगा, right? Similarly, this kind of question can come for x as well, right? अब यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि उन्होंने कोऑर्डिनेट दिया है, तो कोऑर्डिनेट में पहले हमेशा x आता है फिर y आता है, and that is why A is going to be your answer. Okay, now moving on to the fifth question. The graph of a linear equation 2x plus 3y equals to 6 cuts the y-axis at the point. Okay, अब y-axis पे कट हो रहा है. y-axis पे कट होने का मतलब x is supposed to be 0, right? So that is what we need to do. Substitute x as 0. What do you get? You get 0 plus 3y equals to 6. y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई. You can write it down and do it. Okay. 2x plus 3y equals to 6 था. यहाँ पे 0 हो गया. We are just left with 3y equals to 6. तो y equals 6/3 and that is 2. Right? So coordinate क्या बन गया? 2, 0 और 0, 2. Please select carefully. It is going to be D option because y-axis पे है, x हमारा 0 था and hence it is D option. Okay? Now, sixth question. The equation x equals to 7 in 2 variables can be written as x equals to 7 है. Okay, x equals to 7 का मतलब 1. Okay, x equals to 7 का क्या मतलब है? It is x minus 7 equals to 0, right? We have 1x plus 0y minus 7 equals to 0. I am doing step by step converting your x equals to 7 in the standard form. Standard form में convert करके मुझे क्या मिल गया? 1x plus 0y minus 7, or we can still write 1x plus 0y equals 7, and that matches with the B option over here, right? अब इसी तरह से अगर मैं लिख देती y equals to 7 तो आपका x का कोएफिशिएंट 0 हो जाता, right? Over here the coefficient for y was 0. Okay, now next, any point on the x-axis is of the form. Very easy. Quickly think your answer. Any point on the x-axis. This portion is quite overlapping between coordinate geometry and linear equations. Okay, so answer. X-axis की बात हो रही है, so it is going to be C option over here because y component 0 होता है on x-axis and x component can take any value, negative, positive, any real number, right? So it is x comma 0 over here. Now the next one. Question 8 says, any point on the line y equals to x is of the form. Okay, y equals to x है, literally y equals to x है, तो मतलब अगर मेरी x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है, तभी तो x equals to y होगा, right? So the answer comes out to be A option because A comma A
that is x and y both are same and hence y equals to x is over here. अब इसको मैं x equals to y लिखूं या y equals to x लिखूं, it doesn't make any difference. One more thing over here. ये कार्टेशियन प्लेन है हमारा, राइट? x equals to y किस तरह की लाइन होती है? It is always like this, which is एब्सोल्युटली सेंटर से पूरा क्रॉस कर रही है डायगनली, परफेक्ट डायगनल होती है. ओके, क्यों? अगर मैं सपोज करो ये कोऑर्डिनेट ले रही हूँ, तो कोऑर्डिनेट कैन बी -2, -2. द कोऑर्डिनेट कैन बी 2 and 2 ओवर हियर. दोनों जगह पे अगर आप देखो एक्स और वाई दोनों सेम है, एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज द फर्स्ट ऑप्शन ओवर हियर. ओके, नाउ नाइन्थ क्वेश्चन. The equation of x-axis is of the form. X-axis की equation क्या होगी? X-axis पे क्या होता है? Y component 0 होता है, right? Y component 0 होता है, तो इसका मतलब your answer is B. It is y equals to 0 over here, right? Now, question number 10. The graph of y equals to 6 is a line. Okay, these questions are important. Please remember, right? I'll show you on the Cartesian plane over here. ये हमारा Cartesian plane है, right? Y equals to 6. Y 6 यहाँ पे होता है, right? उन्होंने सिर्फ y equals to 6 लिखा है. अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़े, what it would be? It will become 0x plus y equals to 6. यही करेंगे हम, right? यानी x तो हमारा 0 है. आप x में कुछ भी डालो, वो तो 0 है, right? Hence, your line is going to be of the sort which is actually parallel to x-axis always. Whenever you have got y equals to a is any variable over here, that means this line is always parallel to x-axis. And there is an option, see, parallel to x-axis at a distance 6 units from the origin. Obviously, x-axis से कितना distance है? 6 units का distance है, right? This is what they are claiming. So the answer is A option, parallel to x-axis at a distance 6 units from the origin. I have explained it to you so well that you don't even need to read the remaining options. तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन लगे, क्विकली एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करो ग्राफ में and you can answer it, right? Okay, now the last question on the screen. X equals to 5, y equals to 2 is a solution of the linear equation. Okay. उन्होंने एक पेयर दे दिया हमें कोऑर्डिनेट का 5, 2 and we are supposed to check कि from the following options किसको satisfy करेगा, right? तो इस केस में आपको substitute करके देखना पड़ेगा. You do not have any other option apart from substitution over here, right? So let's do that. In the first equation, what do we get? 5 plus 2 times 2. This comes out to be 9. The first option is not correct because हमें right side पे 7 चाहिए. Okay. Next, 5 times 5 plus 2 times 2. ये तो पता चल रहा है पहले से ही ज्यादा है. Invalid. Then C option, 5 plus 2 equals 7. Yes, here we get. देखो, it is impossible कि यहाँ पे multiple options हो, लेकिन still if you want to check for D, yes, let's check. We get 5 times 5 plus 2. It is more than 7. So the answer is C part because C के अंदर 5, 2 coordinate satisfy कर रहा है. And what did I do? I just substituted the value of x in place of x, the value of y as 2 in place of y, and hence we got 5 plus 2 equals 7. Okay. Now, moving on with the 12th question. If a linear equation has solutions -2, 2, 0, 0, 2, -2, then it is of the form. Okay. पिछले पेज पे हमने क्वेश्चन किया था where we were given y equals to x. वहां पे I had told कि अगर x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है तो y नेगेटिव है. लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर मेरा x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव है और अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है. That means it is completely opposite to what we had done earlier, right? I'm making a Cartesian plane to explain it better. ये हमारा Cartesian plane है. अब इसमें जो लाइन बनेगी, if this is my line,
आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल कोऑर्डिनेट ओवर हियर, राइट? ये कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया -2, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ गया 2, -2, राइट? सेकंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट रहेगा। ओके, नाउ किस तरह की लाइन है ये? डू वी हैव y - x = 0? अगर ये होता है तो इसका मतलब y = x हो जाता। दे कांट बी नेगेटिव और पॉजिटिव, एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हो सकते, राइट? सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट, x + y = 0, दैट मीन्स x = -y आता है, y को हमने शिफ्ट कर दिया और ट्रांसपोज कर दिया, x = -y मिल रहा है। इज इट सूटिंग? यस, इट इज सूटिंग, बिकॉज x अगर 2 है, अगर मैं x को 2 डालती हूँ, 2 = -y, -2 = y आ गया, इट इज सैटिस्फाइंग दिस वन। नाउ अगर x मेरा -2 है तो माइनस माइनस कैंसिल होकर 2 = y आ गया, अब ये सेटिस्फाई हो गया, बोथ आर सैटिस्फाइंग। और अगर थर्ड कोऑर्डिनेट 0, 0 ले लो, x भी 0 है तो y तो 0 है ही है, राइट? हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज B, बिकॉज x + y = 0। और इसमें इस तरह से भी लिखा जा सकता है दैट x = -y और -x = y। इस चीज को लिखने के 3 मेथड्स हैं। They could have written the option as x = -y, -x = y, and x + y = 0. You need to ensure that you actually understood this, right? अगर लेकिन कोई डाउट फील होता है, कोई कंफ्यूजन फील होती है, do comment it and I'll clear it right away. Okay? Now, 13th question. The positive solutions of the equation always lie in the. Okay. उन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन दी है, ax + y + c = 0, राइट? तो अब कह रहे हैं कि अगर पॉजिटिव सॉल्यूशंस हैं तो वो किस में लाई करेंगे? इससे इक्वेशन को फर्क पड़ता है। मैं कह रही हूँ मेरी x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कोई भी इक्वेशन है, लेकिन अगर मेरे x और y दोनों पॉजिटिव हैं, so obviously they will exist in the first quadrant only, right? So we have the answer already with us. It is first quadrant. Okay. Now moving on, the 14th question. The graph of the linear equation 2x + 3y = 6 is a line which meets the x-axis at the point. Okay. अब ये हमें क्या कह रहे हैं? We are having a graph of a linear equation 2x + 3y = 6 which meets the x-axis. x-axis को मीट करेगा। x-axis को मीट करने का मतलब y component is 0, right? So let's substitute. We get 2x + 0 = 6. ये सेम इक्वेशन है, पिछले पेज पे भी थी। We had 2x + 3y = 6. वहां y axis की बात हो रही थी, यहाँ पे x axis की बात हो रही है। So what do we get? x = 3. x = 3 का मतलब कोऑर्डिनेट क्या बना? 3, 0, because x axis पे है, y component is 0, right? So we have C option, right? Next, the graph of the linear equation y = x passes through the point. पिछले पेज पे y = x मैंने समझाया था, right? I told clearly whenever we are having y = x or x = y, they both are same values, right? तो यहाँ पे किस में सेम वैल्यूज हमें नजर आ रही है? सिर्फ C में नजर आ रही है, राइट? तो 1, 1 से पास करेगा। फाइन। नाउ द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस 16. If we multiply or divide both sides of a linear equation with a non-zero number, then the solution of the linear equation changes, remains the same, changes in case of multiplication only, changes in case of division only. Okay, let's see how. देखो, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, आई एम टेकिंग इट 2x + 3y = 6. अभी हमने 2 बार डील किया इससे, राइट? अब इसको मैं अगर दोनों साइड्स को कह रहे हैं कि इफ यू मल्टीप्लाई और यू डिवाइड, ओके, आई एम मल्टीप्लाइंग विद 2, आई एम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 2, व्हाट विल हैपन? 4x + 6y = 12 मिलेगा। एवरी नंबर गॉट मल्टीप्लाइड बाय 12. ओके, नाउ पहले हमारे पास ऑप्शन क्या थी? हमारे पास सॉल्यूशन था इसका 0, 3 था पहले ऑप्शन में, right? There was a solution that existed. Now let's see, does it still exist? 0 + 6. Oh, sorry, just a moment. It was supposed to be 0, 2. Okay, so now
12 equals to 12, right? Means multiplication से हमें फर्क नहीं पड़ा, right? Now let's see for division also. So division में हमें क्या मिलता है? 2 से डिवाइड कर रही हूँ. I'm keeping it smaller number so that you understand it quickly. तो 2x अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 2x x बन जाएगा, 3/2 बनेगा, and 6 है on the other side, so it will become 3 again. Now same value 0 to substitute करते हैं. So 0 plus 3/2 into 2 equals 3. 2 to cancel. We are left with 3 equals to 3. That means हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया, हमने डिवाइड करके देख लिया, हमारा आंसर सेम है. जो पहले ओरिजिनल इक्वेशन के साथ सोल्यूशन था वो न्यू इक्वेशंस के साथ भी सोल्यूशन है. दैट मीन्स इट रिमेन्स द सेम. मैंने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज दिखाई हैं आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके. इफ यू वांट टू टेस्ट यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद सम नेगेटिव वैल्यू और सम रैशनल वैल्यू इन केस यू आर गेटिंग मोर क्यूरियस. सी अगर क्यूरियोसिटी होती है it is absolutely valid to satisfy while practicing. पेपर के टाइम क्यूरियोसिटी को satisfy मत करना प्लीज. ओके, now next, how many linear equations in x and y can be satisfied by x equals to 1 and y equals to 2? okay, अब यहाँ पे उन्होंने हमें दो वैल्यूज दी हैं, x equals to 1 and y equals to 2. so they are saying कि कितनी लीनियर इक्वेशंस इसको सैटिस्फाई कर सकती हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है? x इक्वल्स टू 1 का मतलब है x प्लस 0y इक्वल्स टू 1, राइट? एंड देन जस्ट अ मोमेंट, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y? ओके, दे आर सेइंग हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस. देखो एक कोऑर्डिनेट दे दिया उन्होंने, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2. कितनी सारी इक्वेशन का सोल्यूशन हो सकता है ये? इट्स अ सोल्यूशन गिवन टू अस. ओके, इट्स अ सोल्यूशन. सो x इक्वल्स 1, 2, मेरा ये ग्राफ, ये कार्टेशियन प्लेन है, राइट? 1, 2 इज अ पॉइंट समवेयर. अगर ये 1, 2 है, दिस इज माय पॉइंट, राइट? कितनी लाइन से पास कर सकता है एक पॉइंट? कितनी लाइन से पास कर सकता है? टेल मी. आई एम मेकिंग वन लाइन लाइक दिस, one line like this, another line like this, some like this, right? So what I showed, I am showing you there are infinite possibilities. मैंने तो सिर्फ 4 या 5 लाइन्स दिखाई हैं, but infinite possibilities हैं, and that means infinitely many. बहुत सारी equations, infinite equations exist कर सकती हैं, जिसका solution आपको 1 और 2 available हो सकता है. This is a solution. Do not get confused with the language. Okay, it's a solution given to you. They are asking ऐसे कितनी equations हो सकती हैं जिनको ये satisfy करें. So I just showed कि there are infinite possibilities. Understood? Now, next. The point of the form AA always lies. Again a repetitive question. पता चलता है कितना important question है ये, right? एक ही question को कितनी तरह से twist करके दे रहे हैं. AA का मतलब x equals to y. x equals to y का मतलब, right? It can be written as x minus y equals to 0, right? Okay. The point of the form always lies on x-axis, no. Y-axis, no. On the line y equals to x, yes, right? तो प्लीज इस चीज को दिमाग में बिठा लो. y equals to x बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, right? I'll just show the graph once again. ये कार्टेशियन प्लेन है. y equals to x is a line which passes through the diagonal origin exactly diagonally from the first and the third quadrant. Okay, this is x equals to y. Now the last question, do we have more? No. Okay, the point of the form a comma minus a always lies. यार फिर से वही क्वेश्चन, right? Always lies a comma minus a. That means we have x equals minus y. x equals minus y मतलब x plus y equals 0. नीचे नजर आ रही हो ऑप्शन, राइट? कितनी देर लगी? आई थिंक शायद 10 seconds. एक्सप्लेन भी कर दिया, आंसर भी मार्क कर दिया, राइट? और अगर हम देखें, we have again completed these 19 questions in nearly around 25 minutes. I'm not exact of the duration, but almost in 25 minutes में हमने फिर से NCERT Exemplar के सारे MCQs डिस्कस करके खत्म कर दिए, राइट?
I'll repeat, when you are practicing, पहली बार प्रैक्टिस करते हो, टाइम जितना भी लगता है अंडरस्टैंडेबल, लेकिन when you are doing it again and again, do keep it in time bound manner so that you eventually pull up your speed, right? 19 questions हैं, मैं explain कर रही थी, I took around 25 minutes, लेकिन when you are doing it for your own self, obviously, so you should be taking, these are pretty easy questions, 19 questions के 20 minutes लगने चाहिए, 25 लग जाते हैं, well and good, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए. These are so easy questions. And why I'm saying so that when you perform the MCQs, when you do the MCQs, you do not waste time on them, and you can save that time for your lengthier questions. Okay, always manage your time effectively. Happy learning.